जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास जो आज असाइनमेंट है बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखी गई है और आपको बताते चलें कि बहुत ही इजी वर्डिंग होने की वजह से मैं आज आप लोगों के साथ इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं शेयर करने वाला। हाँ, अगर कुछ मुझे मुश्किल वर्ड मिल जाते हैं तो उनके मीनिंग आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा और जो मुश्किल लाइंस होंगी वो भी आप लोगों के साथ ट्रांसलेशन के साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को शुरू करते हैं। Chaucer stands as prominent in 14th century as Alexander Pope in 18th century and Lord Alfred Tennyson in the Victorian era. But Chaucer's place in English literature is more important because he is the first great English writer to use proper English in literature. Chaucer made several contributions to English poetry. Let us discuss his qualities which give him the title of the father of English literature. Contribution to language. Chaucer found his English as a dialect and left it a language. यानी यहाँ पर ये कहने का मकसद है कि चौसर के मकामी जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जो इंग्लिश बोली जाती थी तो वो एक मकामी लैंग्वेज होती थी। डायलेक्ट का मतलब होता है मकामी ज़बान बोलना, तो इंग्लिश एक मकामी लहजे में बोली जाती थी। तो उसने फिर उस इंग्लिश को वैसे का वैसा छोड़ दिया, उस पर काम नहीं किया। चौसर फाउंड द इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। इसके अलावा जो चौसर के इर्द गिर्द जो एरिया में लैंग्वेज बोली जाती थी उसने एक ब्रिक की यानी एक ईंट की शक्ल में देखा और इसे मार्बल के तौर पर छोड़ दिया। यानी भी कहने का मकसद ये है कि वो जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो भी इतने काम की नहीं थी, तो जिस काम के लिए थी उसी काम को वहाँ पर यानी भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी, तो वैसे का वैसा कम्युनिकेशन के लिए छोड़ दिया, उसको भी इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ ना किया। व्हेन चॉसर स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर द इंग्लिश ऑफ राइटिंग वाज अनसेटल्ड. The English language was divided into number of dialects which were employed in different parts of the country. The four of them were the Southern, the Midland, the Northern or Northumbrian. Four है the Kentish. The Midland dialect was spoken in London and its surrounding area. Chaucer employed in his work the Midland dialect. He polished this dialect, gave it flexibility and made it a language in the real sense. All the great writers of England who came after Chaucer were masters of the English, but Chaucer was the great master. Contribution to versification. Chaucer's contribution to English versification is also very striking. He ended the old Saxon alliterative measure and firmly established the modern one. Let us give the important features of the old which Chaucer rejected. Let us give the important features of the old measure which Chaucer rejected. Number 1. There was no regularity in the number of syllables in each line. यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कोई भी एक जो लाइंस पोइट्री की होती थी उनमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती थी। वन लाइन मे हैव 6 syllables एंड द अदर लाइन मे हैव 14। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर किसी पोइट्री की पहली लाइन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होगी, उसमें 6 syllables होंगे, तो अगली जो लाइन होगी उसमें 14 syllables भी हो सकते हैं, यानी भी कोई उसकी तरतीब रेगुलरिटी नहीं होती थी। तो दूसरा पॉइंट जो है द यूज़ ऑफ इलिट्रेशन वाज द चीफ ऑर्नामेंटल डिवाइस, यानी अल्फाज को बार बार दोहराना जो होता था, जो बहुत ही फोकस रखने वाले पावर वाले अल्फाज होते थे उनको दोबारा बार बार दोहराना उस वक़्त की एक सजावट के तौर पर, एक डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ऑल द इलिटरेटेड सिलेबल्स वर सट्रेस्ड, और जितने भी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज होते थे वो सट्रेस्ड वर्ड होते थे। देयर वाज एब्सेंस ऑफ एंड राइम्स, और कोई भी एक ख़ास तरतीब नहीं होती थी। अगर पहली लाइन किसी आखिरी लफ्ज़ जो होता था वो कभी 5वीं लाइन के साथ मैच हो जाता और कभी 10वीं लाइन के साथ, तो एंड राइम का भी वहाँ पर कोई भी तरतीब नहीं थी उस वक़्त जो पोइट्री लिखी जाती थी। देयर वाज फ्रीक्वेंट रेपिटेशन टू एक्सप्रेस इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, तो कई लाइंस को बार बार रिपीट किया जाता था, जैसे सॉन्ग्स में कई लाइंस जो होती हैं इंडियन सॉन्ग्स में या पाकिस्तानी सॉन्ग्स में तो बार बार रिपीट होती हैं ताकि जो इमोशन है उनकी शिद्दत को लोगों के सामने दिखाया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। तो आगे पढ़ते हैं। फॉर डैट ओल्ड फैशन measure he substituted the regular line with end rhyme which he borrowed from France. The new measure has the following characteristics: all lines have the same number of syllables
and rhyme, absence of alliteration and frequent repetition, heroic couplet. In the contemporary tales, he mostly uses line of 10 syllables each. These lines are end rhymed. She was a worthy woman all her life. Husband at church, door she had five. Chaucer stanza. He also used the 7-line stanza in iambic pentameter, having the rhyme scheme A, B, A double B, double C. He borrowed this from the French and is called the rhyme royal or Chaucer stanza. His contribution towards realism. Chaucer is a perfect representative of his age. He is in true sense a social chronicler of England. Chronicler कहते हैं जो इतिहास लिखते हैं या तारीख को लिखते हैं. His poetry reflects the 14th century as a complete whole. Chaucer's principal object of writing poetry was to portray men and women truthfully without any exaggeration. चौसर का जो पोइट्री लिखने का मकसद था वो लोगों को वैसे का वैसे ही दिखाना था जैसे वो दिखाई देते थे. किसी भी शख्स के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की जाती थी. He painted life as he saw it, and he saw it with so watchful eye that it seems that he was viewing all the events as well as characters. Contribution to the novel. Chaucer is strongly appreciated for his narrative skill. Narrative का मतलब होता है बयान करने वाली सलाह. His power to tell an interesting story is simply outstanding. He is one of the world's 3 or 4 storytellers and the first great English storyteller in verse. The storytelling quality of Chaucer led to story and novel writing. Contribution to drama. Chaucer wrote at the time like the novel secular drama had not been born, and yet his works have some dramatic element which are altogether missing in the poetry before him. There are characters reveal themselves. He also introduced dialogues in his poetry. जो पोइट्री में डायलॉग जो होते हैं, बातचीत मुकालमा जो होता है, वो चौसर ने पहली दफ़ा पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में लिखा था. To sum up the above discussion, it can be said that Chaucer has remained till now unsurpassable. Unsurpassable का मतलब होता है कि अब तक किसी का जो मुकाबला ना किया गया हो. All the Chaucerian features help create the modern atmosphere for the latter. So Chaucer is rightly called the father of English literature.